So students, now come to the part 2. In this part, we will cover rate law, molecularity and order of a reaction. Students, this is the favorite part of CBSE. Many questions are coming from rate law, units of rate constant and order of reaction. So now come to first, we will discuss about what are the factors that are influencing rate of a reaction. Rate of a reaction depends upon the experimental conditions. This is the most important thing which you have to learn, which you have to keep in your mind, that experimental conditions such as concentration of reactants, pressure in case of gases. If you are taking gases, then you have to consider pressure. Students, so now dependence of rate of concentration. How rate is dependent on concentration. So rate of a reaction decreases with the passage of time as the concentration of reactant decreases. That means यदि क्या हो रहा है कि concentration of reactant कम हो रही है तो rate of reaction definitely क्या होगा, decrease होगा. Conversely, rate generally increases when reactant concentration increases. So rate of reaction depends upon the concentration. So rate of reaction depends upon the concentration of reactant. Now come to the next, that is most important. Now see students, the representation of rate of reaction in terms of concentration of the reactant. आपको यहाँ पे सबसे important चीज जो ध्यान रखनी है कि हम rate of reaction का representation केवल reactant के terms में कर रहे हैं, केवल reactant की term में कर रहे हैं. That is known as rate law. It is also called as rate equation or rate expression. That means rate law, rate equation, rate expression, these are similar terms. Come to the next. Now we consider a general reaction. If I am taking capital A plus capital B, that means these are two reactants. These are two reactants. And it is giving the product of C and D. But the moles of capital A is taken small a and moles of capital B is small b. That means A, small b, small c, small d are the stoichiometric coefficient of reactant and products. Now, the rate expression or rate law for this reaction is, earlier I have told you, हम rate expression केवल in terms of reactant लिखेंगे. We don't consider product here. So, when rate is directly proportional to the concentration of A and concentration of B, A and B are in multiplication. बच्चे यहाँ generally गलती कर देते हैं, यहाँ बीच में plus लगा देते हैं. So keep in your mind, rate will be directly proportional to what? Multiplication of concentration of A and concentration of B. Now see here, I am using this X and this Y. बच्चों याद करिए, हमने एक केमिकल इक्विलिब्रियम में गुलबर्ग एंड वोगेल लॉ सीखा था. वो कहता था कि जो कोएफिशिएंट होंगे वो कॉन्सेंट्रेशन की पावर बन के यहाँ आ जाएंगे. बट as it is, I am not using A and B here for the power of A and B. Why? Where exponents X and Y may or may not be equal. That means ये X और Y इस A और B के similar भी हो सकते थे. That means we can write rate is directly proportional to A raised to the power A and B raised to the power B. But these are different stoichiometric coefficients. So above equation can also be written as rate is equal to K concentration of A to the power X and concentration B to the power Y. So K is a proportionality constant. ये हमने proportional का यहाँ से साइन हटाया है तो हमने यहाँ K लगाया है. So K is the proportionality constant
and it is called rate constant. So what is the rate law? Rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentrations of reactants. With each term कैसे हुई? Raised to some power, and it may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation. ये जो पावर है ये stoichiometric coefficient के सिमिलर भी हो सकती है एंड डिफरेंट भी हो सकती है, और इस चीज का पता हम कैसे लगाएंगे? हाउ वी विल फिगर आउट दैट दीज आर सिमिलर और दीज आर डिफरेंट? हम इसको पता लगाते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. ओके, लीव दिस फॉर सम टाइम. Now, see, the sum of the powers of the concentration of the reactants in the rate law expression is called the order of chemical reactions. So, order of reaction can be 0. अभी हमने देखा था एस्टर वाले केस में वहां 0 था, 1, 2, 3 एंड इवन अ फ्रैक्शन. हमने क्लोरोफॉर्म वाले केस में देखा था Cl2 की हाफ पावर थी. So, it may be a fraction. A zero order reaction means the rate of reaction is independent of the concentration of reactant. Reaction किसी भी reactant की concentration पर depend होना बंद कर देती है. The reactions taking place in one step are called elementary reaction. ये कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है. What are elementary reactions? The reactions taking place in one step. जो reaction केवल एक step में हो जाएगी, that is called elementary reaction. Now, come to the next. When a sequence of elementary reactions, यानी कि बहुत सारे steps की कोई reaction है, gives us the product, यानी कि product को एक step में नहीं मिल रहा है, वो हमें बहुत सारे step में मिल रहा है. The reaction will call complex reaction. Now, come to the next. Units of rate constant. अभी हमने जो पढ़ा है, same reaction I am taking. Coefficients are small a, small b. Reactants are a plus b, and giving product C, C, D, D. Now, you have understood that this is the order of reaction with respect to A, and Y is the order with respect to Y, and total order of the reaction is X plus Y. So I am writing here it by N. Okay. Now, what is the rate constant? So if I am extracting K here, then it will be rate upon A raised to the power X and B raised to the power Y. So K will be concentration upon time. As earlier we have studied, what is rate? Rate is change in concentration per unit time. And what are these? These are the concentration terms. So 1 by concentration N. N is X plus Y. So overall concentration and concentration. अगर ये term ऊपर जाएगी तो ये क्या बनेगी? 1 minus N upon time. So by this we can calculate different units for different order. K for units for K, different reaction order. So now we are using SI units of concentration. That means mole per liter, and time के लिए हम use कर रहे हैं second. So first, zero order reaction. If reaction is not dependent on the concentration of any reactant, अगर वो किसी पर depend नहीं कर रही है, then in that case rate is equal to K, क्योंकि वो ना इस पे depend कर रही है. ये A raised to power 0 हो जाएगा, ये B raised to power 0 हो जाएगा. मैं इसके लिए आपको एक वीडियो क्लिप और दे रही हूँ बच्चों अलग से. अगर ये A raised to the power 0 हो जाएगा, ये B raised to the power 0 हो जाएगा, तो किसी की भी पावर 0 हो, दैट मीन्स वो टर्म बन गई 1. तो रेट इज इक्वल टू क्या आ गया इस केस में? A. यानी कि रेट इज इक्वल टू किसके है? रेट इज इक्वल टू है K. Okay, so if R is equal to K, then the unit will be K. R की यूनिट क्या होगी? रेट की होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड. Okay, now first order reaction. First order reaction means when exponent is 1. Okay, so first order reaction will be concentration upon time. That means concentration से concentration term cancel हो जाएगी और ये रह जाएगा 1 upon time. देखिए यहाँ concentration कितना आ जाएगा? concentration आ जाएगा 1. Okay, और यहाँ concentration n is equal to क्या रहेगा? 1.
सो ये कैंसिल आउट होंगे और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/टाइम, तो ये रह जाएगा ओनली सेकेंड इनवर्स. सो likewise for the second order reaction, if order is 2 then n is equal to 2. so it will be, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 1 minus n, इसका मतलब माइनस का बचेगा, मोल माइनस 1 लीटर प्लस 1 सेकेंड. Now what is the molecularity of reaction and how it is different with the order of reaction? अभी हमने बात की थी order की और वो निकाल रहे थे हम किससे, only and only by experimentation. Now come to this molecularity of a reaction. The number of reacting species, atoms, it may be atoms, it may ions or it may molecules taking part in an elementary reaction. Elementary reaction पता है ना आपको, which are taking place in one step. Okay, which must colloid simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity. यानी कि molecularity क्या है, number of reacting species, number of molecules taking part in reaction, number of atoms taking part in the reaction, number of ions taking part in the reaction. So unimolecular reaction. What is unimolecular reaction? When only one reacting species is involved. That means decomposition of ammonium nitrite. Here molecularity is 1. That means मैं इसको coefficient देख के भी पहचान रही हूँ कि molecularity 1 है, but I cannot determine, I cannot predict what is the order of this reaction. Okay, केवल experiment से decide होगा कि इसका order कितना है, इसकी कितनी पावर पर ये रिएक्शन का ऑर्डर डिपेंड कर रहा है. बाइमोलिकुलर रिएक्शन, that is decomposition of hydrogen iodide into hydrogen and iodine, and the last is trimolecular or termolecular reactions involve simultaneous collision between 3 reacting species. इसके आगे हम आपको बताएंगे कि इससे ज्यादा collisions possible ही नहीं होते हैं. Now come to the next part. The probability that more than 3 molecules can collide and react simultaneously is very small. That means 3 molecules से ज़्यादा collisions कम ही मिलते हैं. So reactions with the molecularity more than 3 are very rare and slow to proceed. यदि किसी में 3 से ज़्यादा molecules collide भी कर रहे हैं तो उसका proceeding reactions rate जो time होगा वो बहुत कम हो जाएगा. It is therefore evident that complex reactions involving more than 3 molecules in the stoichiometric equation must take place in more than one step. That means एक से ज़्यादा step में होगी. The slowest step, ये सबसे important चीज है. यदि कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो उसका जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा. ओके, एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड which is catalyzed by iodide ion in alkaline medium. Okay, I am taking here hydrogen peroxide H2O2 alkaline medium लिया है मैंने और इसका जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ये देखिए ये 2 स्टेप में हो रहा है. The first step is when H2O2 reacts with I minus and get converted into water and IO minus, and in the second step that is when H2O2 next second molecule of H2O2 reacts with this IO minus and we will get water, iodide and oxygen. So this is slow step and this is fast step. ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा है आयन इससे और ये यहाँ आयन बनने में बहुत धीरे चल रहा है. तो कौन दोनों स्टेप में से कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होगा, वो होगा ये वाला स्टेप, स्लो स्टेप. जो इसमें कॉन्सेंट्रेशन आ रही है रिएक्टेंट की, जो रिएक्टेंट इस स्टेप में आएंगे वही इसका ऑर्डर बनाएंगे. सो स्पीशीज IO माइनस इज कॉल्ड एज एन इंटरमीडिएट स्पीशीज. देखिए IO माइनस यहाँ है, फिर रिएक्ट किया डिसअपियर हो गया. सिंस इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बट नॉट इन द ओवरऑल बैलेंस्ड रिएक्शन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी. ये CBSE कभी कभी लिखवा भी लेती है कि एक डिफरेंस लिखो, 2 डिफरेंस लिखो, और MCQs में आने के बहुत चांसेस है. सबसे पहला तो यही इंपॉर्टेंट है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी एंड दिस इज theoretical property. What is the order of reaction? This is the sum of the powers of the concentration of the reactant. मैंने आपको बताया था कि केवल हमें reactant की concentration की power को add करना है. In the rate law expression is called the order of that reaction. And the number of reacting species, ions or molecules taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction.
ऑर्डर कितना हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीग्रल हो सकता है, इवन जीरो भी था जब रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। और मॉलिक्युलरिटी इट ऑलवेज एन इंटीजर एक्सेप्टिंग जीरो, मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। इवन ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। It may change with change in experimental condition, but molecularity cannot change. It is applicable to elementary as well as complex reaction. लेकिन molecularity में क्या होगा? It is applicable only for elementary reactions. For complex reaction, molecularity has no meaning.